morning everyone. How are you all? Okay. Today we are going to learn about the words used to talk about past. ठीक है? पास्ट में हम कैसे मतलब पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट में तो पास्ट की बातों को हमें कैसे बताना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे. ठीक है? सो बिफोर गोइंग फर्दर मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, राइट? एंड वॉच इट प्रॉपरली. यस? ओके. Welcome to the learning activity Time Gone By. This activity covers the simple past tense to talk about things that have already happened, the past tense of regular verbs created by adding ed, the past tense of irregular verbs, the past forms of to be, has and have, prepositions of time, in, on and at with the past forms of verbs. Look at the photographs and read the description of Manu's stay in Goa. Note the verbs went, stayed, swam and enjoyed. These verbs are in the past tense. The past tense is used to describe an action that has already happened. For example, when Manu says, "Last summer I went to Goa," he is describing something that happened and that has been completed before the present time. Let's learn how we can change verbs in the present tense to the past tense. Some verbs can be changed to the past form simply by adding ed to the verb. For example, the past form of play is played, the past form of look is looked. For some words that end in y, the y is replaced with I before adding ed. For example, the past tense of study is studied. Verbs that form the past tense by adding ed are called regular verbs. Not all verbs are changed to the past tense by adding ed. Some verbs change their form entirely in the past tense and some do not change at all. These verbs are called irregular verbs. For example, the past tense of eat is ate, the past tense of see is saw. Verbs such as put and beat do not change when converted to the past tense. The past tense of put remains put. The past tense of beat remains beat. Read is another verb that does not change in spelling when converted to the past tense. However, the pronunciation of the verb changes. The past tense of read is read. Listen to this story about a group of people who get lost in a jungle. As you listen, read the text and observe the past tense of the regular and irregular verbs used in the story. Let's continue reading the story. Click the button to listen to the audio. All of us froze. We looked in the direction of the sound, but we saw nothing. We waited for 10 minutes, all of us stiff with terror. Finally, we decided that there was nobody near us. Maybe it was the shriek of a bird, or maybe... Suddenly, one of the women screamed in horror. We saw a band of 6 gorillas racing towards us. All of us shrieked and ran for cover. That's when I tripped and fell. I was too stunned to move for a minute. By the time I looked up, the gorillas were upon me. They had a movie camera and were filming me. I shook my head in disbelief. A gorilla with a movie camera? On a deserted island? My head was spinning. Just then, one of the gorillas took his head off his shoulders. I thought I was losing my mind. That's when I realized it was a man in a gorilla costume. "Welcome to Waikiki," he said. Let's learn about the verb to be. The verb to be has two forms, is and are. The past form of is, was, and the past tense of are is were. Was is used with the singular form. For example, I was born in Delhi. Was is also used with he, she, and it. Were is used with the plural form. For example, we were born in Delhi. Were is also used with you and they. The verb to be is different from other verbs because the past form of this verb changes with the singular or plural form and with the persons I, you, he, and she. The past forms of other verbs remain the same with singular and plural forms and with persons. Now let's learn about the verbs has and have. Has and have are used to refer to things that belong to someone. For example, I have a dog and she has a cat.
The past form for both has and have is the same, had. While has is used with he, she, it and the singular form of subjects, have is used with I, we, you, they and the plural form of subjects. However, we can use the past form had with all these forms. Let's learn to use the prepositions for time, in, on and at to talk about activities in the past. We use in for long periods of time such as months, years and seasons. For example, we went on a holiday in August, or we visited the Maldives in 2005, or we came here in the winter. We use on for days and dates. For example, the party was on the 25th, or the party was on Wednesday. We use at with time and for the weekend. For example, I ate lunch at 2 o'clock, or I slept at midnight, or I watched a movie at the weekend. Remember, we do not use a preposition with yesterday or today or tomorrow. It is incorrect to say I went there on yesterday. We can say I went there yesterday. Let's sum up what we have learned. In this learning activity, we learned the simple past tense of verbs, the past tense of regular verbs created by adding ed, look, looked, walk, walked, work, worked. The past tense of irregular verbs, eat, ate, rise, rose, find, found. The past tense of to be, has and have. Prepositions of time, in, on and at with the past tense forms of verbs. We went for a holiday in August. The party was on Wednesday. I slept at midnight. Congratulations! You have completed the learning activity to the past tense forms of verbs. Yes, children. So you watched the video? GIC Gangtadi? मेरी वॉइस आ रही है? बेटा हैंड रेज करके दिखाओ अगर वॉइस आ रही है. ओके. सो अभी बेटा whatever you have seen on in this video, अभी हम इसे सम अप करें तो आपने क्या क्या सीखा है, राइट? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, द वर्ब्स व्हेन दीज आर चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, तो कैसे होएगा? जैसे लुक है तो लुक का इट बिकम्स लुक्ड, वॉक का वॉक्ड, वर्क का वर्कड, एंड इफ यू यूज वर्ड जंप तो इट विल बिकम jumped. ठीक है? What we have done here, we have just added ed to it, and it was discussed earlier also कि these are what? Regular verbs, right? But there are certain irregular verbs जहाँ पर कि completely जो है ना word की spelling change हो जाती है. Like you can see here, eat है तो eat क्या बन गया? It became eat. Eat की spelling EAT है and it became ATE, है ना? Completely change हो गई. यहाँ पर देखो कोई इतना फर्क नहीं है. Look है, look वैसे ही रह गया और ED उस पर add हो गया तो it became looked. ठीक है? Now again if you see here, rise है, rise का क्या हो गया? Past tense क्या हो गया? Rose. Clear? Find का completely change हो गया and it became found. Right? So this way we saw कि these verbs how we use. For better understanding मैं तुमको एक दूसरी एक्टिविटी और दिखाती हूँ. Right? Okay. Just hear these dialogues. Right? One of you will repeat them. Okay? When did you leave Delhi? We left Delhi on Saturday the 26th. What time did you leave? We left at 6 o'clock in the morning. When did you reach there? We reached there at 11:30 a.m. When did you have your meals? We had lunch at 1 o'clock and dinner at 9 o'clock. What time did you light the bonfire? We lit it at 8 p.m. When did you return to Delhi? We returned at 11 o'clock in the morning yesterday. Okay. So you saw what is being done here? Everything is being said in past tense. ठीक है? Two people are talking. One is Amita and the other is Karan. ठीक है? Amita. Amita is asking, when did you leave Delhi? ठीक है ना? आपने दिल्ली कब छोड़ा था? मीन्स मतलब आप दिल्ली से दूसरे प्लेस में के लिए कब मूव हो रहे थे? राइट? व्हाट करण आंसर्ड?
He said we left Delhi on Saturday the 26th. अभी देखो इसमें जो तुम्हारी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है, राइट? इफ यू विल सी योर कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं पास्ट की, तो क्या है यहाँ पर लीव की जगह क्या है? लेफ्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है? लीव ही लिखा है और पास्ट की ही बात हो रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं पहले बताती हूँ कि हियर इट इज रिटन डिड। तो जब भी डिड आएगा तो डिड के साथ जो है ना, चाहे हम जब भी पास्ट की बात करें तो डिड के साथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम ऑलवेज, ठीक है ना? जैसे मैं बोलूंगी इफ आई आस्क यू वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, ठीक है ना? समथिंग लाइक दिस, ओके? तो वेर एवर डिड विल कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम। यस, तो व्हाट ही आंसर्ड? ही आंसर्ड ही लेफ्ट दिल्ली ऑन सैटरडे। तो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, राइट? सो इट इज शोइंग दैट कुछ पास्ट के बारे में बात हो रही है, राइट? नाउ अमिता इज सेइंग दैट व्हाट टाइम डिड यू लीव, अब तुमने कितने बजे छोड़ा था, राइट? तो ही Karan is answering we left at 6 o'clock in the morning। अगेन देखो यहाँ पर भी लेफ्ट आया, यहाँ पर भी लेफ्ट आया, ठीक है? नाउ व्हेन डिड यू रीच देयर, वहां पर कितने बजे पहुंचे? अभी देखो अगेन डेड के साथ क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म आई रीच की, रीच नहीं लिखा है, राइट? अब यहाँ पर डेड तो है ही नहीं, आंसर में तो डेड नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ गया? रीच्ड आ गया। क्लियर? सो इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? व्हेन डिड यू रीच देयर? वी रीच देयर एट 11:30 AM। क्लियर? नाउ अगेन व्हेन डिड यू हैव योर मील्स? वी हैड लंच एट 1 o'clock, ठीक है? एंड डिनर एट 9 o'clock। सो अभी पूरा कन्वर्सेशन में आपने क्या देखा, राइट? समवेयर सारे के सारे वर्ड जो है आपके सेकेंड फॉर्म में, बस डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है। क्लियर है? ओके, चलो हम लोग एक और एक्सरसाइज करेंगे, राइट? विल मूव टू सम अदर एक्सरसाइज और बेड। ओके, वी विल रिवाइज योर। देखो, पास्ट टेंस वर्ब्स रेफर टू एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है? जो पहले से हो चुके हैं। अब जस्ट सी सम रूल्स हियर, राइट? We already discussed also, but like add ed to the end of the verb. जैसे want है, we will make it wanted. ed add किया, wanted बन गया, right? Okay. When a present tense verb ends with one vowel and one consonant, double the last consonant. ठीक है ना? जैसे ये dropped हो गया, ठीक है, right? क्या यहाँ पर एक consonant है, एक vowel है? Everybody knows कितने vowels होते हैं? 5 vowels होते हैं। AEIOU, ठीक है? अभी देखो ये ड्रॉप में क्या आया? ड्रॉप में एक वॉवल है O एंड वन कॉन्सोनेंट इज देयर। सो व्हाट वी हैव डन हियर? वी हैव एडेड, व्हाट वी हैव डन? वी डबल्ड दिस कॉन्सोनेंट। लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है P है, तो हमने क्या किया यहाँ पर? वी एडेड वन मोर P हियर एंड देन अगेन एडेड ED टू इट। क्लियर? ठीक है, जब भी ऐसा होगा। नाउ व्हेन द प्रेजेंट टेंस वर्ब एंड्स विथ a silent E, ठीक है, राइट? सो लाइक एग्जाम्पल इज गिवन हियर, बेक दिया हुआ है, ठीक है ना? तो देन इट बिकम्स बेक्ड, ठीक है? व्हाट वी हैव डन, हमने इसमें ईडी नहीं लगाया, पहले से ई है वहां पर, विच वॉज साइलेंट हियर, ठीक है ना? क्लियर? सो वी मेड इट बेक्ड। कैसे किया? ओनली वी एडेड डी, अ सिंगल डी इज एडेड देयर। Clear? When the present tense verb ends with a y, ठीक है? Change the y to I। क्या करेंगे हम? y को I में बदल देंगे, ठीक है? और then we will add ed to it, ठीक है? जैसे यहाँ पर it is written fry, तो we will drop this y। ड्रॉप करने के बाद इसकी जगह we will put I here and then again ed। तो ये सेकेंड फॉर्म बन गई फ्राई का फ्राइड। जैसे ट्राई होता है, राइट? TRY ट्राई। तो हम क्या करेंगे? अगेन वाई को ड्रॉप करके आई लगा करके देन ईडी अगेन, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं लाइक वाई में एंड तो होते हैं बट
they are written like that only. ठीक है ना? और पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. जैसे फ्लाई है, फ्लाई का फ्लू हो गया. क्लियर? Okay. Fifth point is sometimes you need to change the entire spelling of the, okay, here it is written, ठीक है, of the present tense verb. Example क्या है? Find है. Find का completely change हो गया found में. मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं किया हमने कि finded कर दिया. Yes, what, yeah, it is there in English like this only. Find, F-I-N-D, find. यहाँ पर it became found. Clear? Okay. So certain exercises are also given here. Just look here. What you have to do is you have to rewrite the given sentences in the past tense. तो कैसे करोगे आप इसको? First is the wind blows furiously. Wind कैसे blow करती है? Furiously. अगर हम इसको past tense में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? The wind blew furiously. हमने क्या किया? ब्लो को हम क्या कर देंगे? इसको चेंज करेंगे. इसका जो पास्ट टेंस होगा ये प्रेजेंट टेंस में है, राइट? और ब्लो का पास्ट टेंस क्या होगा? ब्लू. ठीक है? सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? द विंड ब्लू फ्यूरियसली. ठीक है? व्हाट इज सेकेंड वन? द बॉय स्टैंड्स ऑन द डेस्क. ठीक है? बॉय कहाँ खड़ा होता है? डेस्क के ऊपर. और अगर हम इसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हाउ विल वी डू? द बॉय स्टूड ऑन द डेस्क. स्टैंड का क्या हो जाएगा? स्टूड. क्लियर? ओके. नाउ ही फील्स सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस. ठीक है? तो फील का क्या होता है? फील का होता है बेटा पास्ट टेंस फेल्ट. क्लियर? तो हम यहाँ पर फेल्ट कर देंगे एंड द सेंटेंस विल बिकम ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस. क्लियर? लास्ट वाला कर लेते हैं. दे ड्रॉप द बॉल. ठीक है? अभी हमने देखो, अभी हमने यहाँ पे लर्न किया था ना कि अगर एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वॉवल होगा और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे? हम वहां पर उसको क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे एंड देन वी विल ऐड ईडी. तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट विल बिकम दे ड्रॉप्ड द बॉल. So children, today we practiced for what? Past tense, simple past tense. Yes? Tomorrow we will again come with some new exercises. We'll learn new things tomorrow. Right? अभी आप लोग क्या करोगे कि you will practice for these words. Right? आप अपने आप से कुछ verb की forms, present tense में form लिखोगे and then you will practice it. ठीक है? और उसकी past tense में उसकी क्या फॉर्म होगी? सिंपल पास्ट टेंस में यू विल राइट इट इन योर नोटबुक. ठीक है? सो विल मीट टुमारो. राइट? टिल देन, बाय बाय.